आपको बताया गया था प्रीवियस क्लास में, प्रेजेंटेशन होगा आप सबका। तो ये क्या तरीका है, रेडी है तुम्हारा? क्यों नहीं रेडी है? मैं तुमसे बोला हूं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे में कभी सीख पाओगे मशीन लर्निंग? बताओ, जब कुछ सीख पाओगे ऐसे में? तुम लोग अपने हिसाब से क्या करते हो, चेंज करने की कोशिश करते हो। जब मैंने बोला करके लाना है तो करके लाना है। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ है? रेडी है तुम्हारा? क्यों नहीं रेडी है तुम्हारा? ऐसे में क्या कैसे काम चलेगा बताओ मुझे, चलेगा काम ऐसे में? सिस्टम तुम्हारा रेडी है कृष्णा? आ जाओ, आओ। मतलब तुम लोग कुछ सिस्टम लेके आओगे, बता दिया गया सिस्टम प्रेजेंटेशन देना है, मतलब क्या? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? रेडी है तुम्हारा? क्या प्रॉब्लम? लाओ इधर, देखिए क्या इशू है। सबका इच्छा है का चेक करूंगा मैं। क्या नाम रखियो? व्हाइट एंड वाइटेस्ट, कहाँ है व्हाइट एंड वाइटेस्ट? एक्सटेंड व्हाइट एंड वाइटेस्ट। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या है ये देखो। बताइए। ऑनी है, सीधा आउटपुट डाउन कर दो चुपचाप, ऑर्डर बिना आवाज। क्या था? एक्सटेंड व्हाइट अननोन लेवल। कौन सा डेटा सेट यूज किया हो? पोस्टर किस पे यूज किए हो? कौन सा एल्गोरिथम यूज किए हो? केनन। तो केनन में जो यूज किया, केनन जो है वो कौन सा क्लासिफायर को यूज कर दिया हो, इसके लिए वो चेंज करना पड़ेगा ना। उसके बाद केनन कहाँ यूज, तो क्लासिफायर के जगह पे क्या यूज करना होगा? रिग्रेशन क्या यूज करना होगा, ये बताओ। तो रिग्रेशन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब वहां पे लेवल होगा, वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो एल्गोरिथम भी वैसा होना चाहिए, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था इस तरह से, ये जो लिखे हो ना, ये है ना के है ना, जिससे रिग्रेशन यूज करो, क्या यूज करोगे? ठीक है, अब देखो ट्राई करो तो हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या कह रहा है? टेबल तुम्हारा डेटा कहाँ से लोड किए हो? करने की क्या जरूरत है, सब डेटा सही है। पोस्ट ऑफ डेटा, पोस्ट ऑफ टारगेट सही है। इसके बाद एक्सटेंड स्प्लिट किया हो, क्या कह रहा है? क्लासिफायर, ये भी तो गड़बड़ है, फिर आगे चेंज करना होगा।
है ना रिग्रेशन। क्या दिक्कत है? थोड़ा सा इसमें कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? नहीं बेसियन है ना? इसमें कौन सा दिखते हो? ठीक है, यहाँ पे क्या दिक्कत है? नहीं, सर्वर का प्रॉब्लम नहीं होता है। होता क्या है, कभी कभी नेट स्लो होता है ना, इस तरह से हो जाता है। हो गया आप कनेक्ट? और जो बच्चे हैं नेक्स्ट वो ज्वाइन कर लेंगे पहले से। प्रोजेक्टर पे कनेक्ट कर दो। स्पीकर ऑफ कर दीजिए आपने। ऑन कर दो। दिखाओ थोड़ा सा। लाइट कर ये दोनों जो है वो कम मत करो, इसको और इसको बॉर्डर से ठीक। Now you can start. Good afternoon, everyone. My name is Rohit Kumar. I am the student of CIMAGE College. I am in second year, and I am here to present a presentation on the concept of the machine learning that is based on logistic regression. The logistic regression is the name of the algorithm which is used to implement the machine learning, and it works on the binary data sets, and it finds out the answer of the output of the input data. And here is
a few introduction of logistic regression, like it is the supervised machine learning algorithm that can use to model. आराम से कोई गड़बड़ नहीं आराम से Here is the description of logistic regression algorithm. It is a supervised machine learning algorithm that can be used to model the probability of a certain class and event. It is used when the data is linearly separable and the outcome is binary or dichotomous in nature. That means logistic regression is usually used for binary classification. It works only on the data of binary data, not on quadratic or any other data. And here I'm importing the data sets like cancer data set and storing the value of the data set into a variable, and after that I'm separating the value like input part and the output part into separate variable, that is x. In x I am storing the data, and the y we are storing the target. And this line is to import the trend test split. Basically it works, it splits the data into four parts. Like if we give input into it in it x and y, then it is split into four parts. It makes the trend data and the test data, and so on. So that I am passing here x and y and the test size, and it is split into four parts like x trend, x test, and y trend and y test. And explain the process of training this. And there are a question like why we split into four parts the data, because we use that anything we make, then we first of all try that it is best or not. That's why we are separating into two parts, the test part and the trend part, which we will train data with the help of trend part, and we will test the algorithm with the help of test part. And third block, I am importing the logistic regression, that is the algorithm on which basis we implemented the machine learning to predict some values. And I'm making here the object of the logistic regression, and after making object I train the data with the help of fit function. There is a fit function which helps to train the algorithm, and it accepts two parameters, x train and y train. And after that I am predicting the value with the help of predict function. That object is the object of logistic regression, and predict function accepts only one parameter and more, but I have given him into it only one parameter, that is very necessary and mandatory also. And it will predicted, it is predicted, and now I am checking the score that what percent the algorithm is trend. So the percentage of training is that 94%, greater than 94%, but we can say that 94%. And after training the data, we test with the help of confusion matrix. And this line is for importing the confusion matrix from sklearn.matrix. And the function is confusion matrix that accept two parameter only, that
what we are going to test and what is the predicted value. And on the basis of predicted value, it actually it compares two values like what is the prediction value and what is the y-test. It only compares between two variables and two values we can see that. And after that, I'm printing the comparison value comparison matrix on the screen, like with the help of print function. Like it has total, we can check shape of the data. Let it go. Here I have checked the shape. There are 114 data, and in which 42 data which is belongs to the class 1 and the 67 data which belongs to the class 2. And as I have said that there are only two class because it works on a binary class data. So and the next I have represented it into pictorial and graphical representation, like it is with the help of Seaborn and Matplotlib. And so that I have imported it as a SV and Matplotlib as a PLT. And after that, I have made the size of the figure. What will be the size of the figure that I have inserted here. And after that, I have printed the matrix with the help of heat map function. There are a function heat map that SB contains, and if we give the CNF, it means confusion matrix, the value of confusion matrix, then it represents on it into a graphical and the colorful representation. And so that I have represented here, and that is the label that shows here, that is data and that is prediction. It is the y-axis, it is the x-axis, and that is the y-axis. And this function shows the result what it contains. After that, I have reported it with the help of classification report. There are a class that works like a report, make the report on any paper or at any hard copy and soft. We can make hard copy and soft copy with the help of it, and so that I have made it into like report. It is a variable and this is the function, and it will take two parameters and more parameters, but there are necessary and mandatory only two parameters, like what is the test and the predicted value. And that's why I have printed the y test and the prediction value. And the here, as I have said earlier, that I am printing the shape of the data y test, that is 114, and the whole report on this screen I am printing here. That is the report that 45 data which belongs to class 0 and 69 data which belongs to class 1, and that is the whole representation of logistic regression. Thank you. Thank you, sir. And I have another also. Yes. So कंटिन्यू कर, कौन सा लगेगा जब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है मेरे बारे में, जैसे कि सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है, और सबसे पहले थोड़ा सा जो डेटा सेट लिए हो ना, वो डेटा सेट किस बारे में, जैसे अभी कौन सा लिए थे आपने, ब्रेस्ट कैंसर लिया, तो ये बताओ कि मेडिकल या हेल्थ केयर का हमने लिया है जैसे Sir, I have told ठीक है सर, थोड़ा सा और एक्सप्लेन अपने लैंग्वेज में ना, कंफर्टेबली विद, प्रेशर में नहीं जाना है, प्रेशर में थोड़ा सा दिख रहे थे, प्रेशर में नहीं जाना है, और सब हर एक चीज को एक्सप्लेन करोगे।
Hello everyone, I am Rohit Kumar. I am the student of CIMAGE College. I am in second year and I am here to present a presentation on machine learning. My topic is decision tree algorithm, which works on regression, which will work on the data of regression type data, and it will predict a value of something, anything, and something. And I have made it on Boston data sets, and it is the data set to predict a value of a house in Boston city only, not in everywhere, but in a Boston city. And first line, as you know, and as we know that it is line to import the data set from sklearn, and after that we get the data, actual data into a variable, like with the help of load function. And after loading the whole data, like it contains the two parts of a data, like input part and the output part. And that's why I am here differentiating and separating the value input part and the output part, and with the help of data and the target. And here the method that is called data and target we use with the variable with the use of dot operator. And so here I am separating the value. X is the input part and the Y is the output part. Like what is the resultant value that is stored in the Y, and what is the inputted value which is stored in X. And after that I am importing here the trend test function, which helps us to split a value into two parts, and that part is called the trend and the test. And why we are separating into two parts, and then we separating into two parts because if we train data and train anything, then we have to test that it works properly or not. If it works, then it is workful and it is helpful, and so that we separate the data into four parts. It accepted three and more parameter, but they are necessary only three parameter, like x, that variable is going to be separated, and the y, that is also is going to be separated. And after that we can use test size or trend size. If we use here trend size, then we can also use trend size. But as you know that whatever we can use, then I have used test size. It means that 20% data will store into the test variable, and the 80% of data will store into the trend variable. And after that, this line is to import the algorithm, or we can say class. Decision tree regression is a class with the help of which we can predict any value and any resulted. And so next line I am making an object. As we know that if we want to use a class, then we have to create first of all object of that class, and then we can use. And after that I am training the algorithm with the help of fit function. And it accepts only two parameter. First of all is x trend, that on which basis we are going to train that variable we will insert into it. And the next, what is its output part that we will give it. And after that I am predicting the value, and with the help of predict function it accepts only test. Like I have told earlier that we split into test and train part to test the data,
and that's why I am testing that what it works properly or not, and so that I am predicting here, and after that, and this score is the training of a algorithm, not the predicted resultant, and so that it will train 100%. It means it was good. It is good for that algorithm and for me also. And after that, I am importing here I2 score, which is in a inbuilt with matrix. I am not run before it, and so that it is figure. And it will help us to know what is your score of your predicted value, and that's why it is used. It is inbuilt within matrix. So we imported scalar.matrix, and after that it is a function which accept two parameter, like what is the test and the prediction. What is the prediction and what you want to test, and so that I have inserted into it I test and the prediction. That variable is here, and this variable is used here, and on which basis it will show is score like 80%. That's all. Thank you all of you. Thank you so much. Okay. Who is next? उठा लो, वहां पे रख लो पहले अच्छे से. और टॉपिक कौन सा है? जस्ट लिसन टू मी फर्स्ट. सबसे पहले तो लीनियर रिग्रेशन है क्या, ये बताइए. इट इज अ लीनियर मॉडल which will predict the value of any data on the basis of regression problem. Yani we can solve the regression problem with the help of linear regression. What is a linear model? मतलब क्या हो, ये line के help से. So basically we try to draw a straight line so that it can predict the value. Yes sir. Yes. इसके अलावा क्या है? Data set कौन सा लिया? Question. Question क्या है? Question sir, house price prediction. House price prediction. सारा टॉपिक नॉर्मली एक्सप्लेन करना, ठीक है. सो जस्ट कनेक्ट हो गए आप. स्पीकर आप ऑन कर लीजिए. हो गया.
Onion. काम निकालना आउटपुट आगे समझना है का यस हम इसको समझ रहे हैं ठीक है कुछ देखा ओके हाँ चलो ठीक ओके Kumar, I am a second year BCA. I am a student. I am a second year BCA student. I am here to explain about linear regression and algorithm of machine learning. Linear regression is a commonly used supervised machine learning algorithm that predict values. Linear regression assumes that there is a linear regression. Linear relation present between dependent and independent variables. In simple words, it finds the best fitting line plane that describes more or more value. Here first of all I am import NumPy library and pandas library. Then I am importing sklearn, and from sklearn I am importing Boston dataset. The Boston housing dataset is derived from information collected by the US Census data concerning about the housing in the area of Boston city. Here I am storing data of Boston in X variable and target Boston in Y variable. After that, I am importing train test split function from sklearn model selection. Then the X and Y variable is split into four parts. First X train and Y test, and then Y train and Y test. It is derived in 3 to 7 SU. Then now sklearn model library I am importing linear regression algorithm. I use the NR variable to store the linear regression function. Then the strain and Y train is fitted into linear regression algorithm. Then find the score. I am using a score function from linear regression algorithm. After that, for prediction, I am using a predict function for X test. Yes. Then after predicting the value of X test, for checking the performance of the model, I am using R2 score function taken from sklearn.matrix library to store the score of the model
I am using a score variable to score the performance of the model trained. How much score you got? I think 78.36%. Okay, sir, thank you. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अभी कोई बच्चे इसमें है? अभिषेक कौन है? आज तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप रेडी रहिए, अच्छे से प्रिपेयर करके आइए। तो लेफ्ट हो जाइए आप। देखो बच्चे, प्रॉब्लम ये है, जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, ठीक है ना। अब मैं बहुत कुछ बता दिया लेकिन आप लोगों ने कुछ ट्राई ही नहीं किया, फिर कोई मतलब नहीं बनता है ना। मैं जितना पॉसिबल हो सकता है मैं स्लो चलता हूँ, जितना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि लिमिट है, कभी स्लो नहीं चल सकते हैं, लेकिन जितना है पॉसिबल होता है मैं स्लो चलता हूँ। बीच में आप लोगों को मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आप लोग करें, लेकिन करके आओगे, और जब तक आप नहीं करोगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप अपने से खुद को कोड से इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, चीजों को नहीं एक्सप्लोर करोगे, तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं कि आप कुछ सीख सकते। इसीलिए जो बच्चे नहीं करके लाए हैं, सारे बच्चे करके लाए। मैं अगले क्लास में सबका ईच एंड एवरी का चेक करूंगा, सारे बच्चे का चेक करूंगा, कोई बहाना नहीं चाहिए। क्योंकि देखो ये अभी तो आप ये पार्ट कर रहे हो, इसके बाद मैं डिप्लॉयमेंट बताऊंगा आपको कि कैसे इस एल्गोरिथम को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो पहले एल्गोरिथम के बारे में सीखोगे तब तो डिप्लॉयमेंट सीखोगे ना। उसके लिए फिर एंड्रॉइड स्टूडियो का नाम सुना होगा आपने, एंड्रॉइड ऐप बनाने बताऊंगा, तो वो सब चीजें कैसे होगा, वो अलग पार्ट है, अलग लेवल है इसका। अभी तो आप एल्गोरिथम सीख रहे हो, बेसिकली कैसे यूज करते हैं। छोटी ये चीज मैं सिखा रहा हूँ इसलिए नहीं कि बस आप सीख लो, इस पे आप अपना कुछ आइडिया सोचो, उस पर कुछ इम्प्लीमेंट करो, कुछ बनाओ, उस पर अपना डेटा सेट। आपको लगता है कि कुछ और प्रेडिक्शन आपको करना है, अपना डेटा बनाइए उसको। डेटा के लिए कुछ नहीं करना, आप बस एक्सेल में बना के लाइए, बाकी मैं बता दूं कैसे इसको डेटा से कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपना डेटा सेट बनाना चाहते हो, आप क्या करो, एक्सेल फॉर्मेट में बना के लाओ, पता ही डेटा सेट किस फॉर्म में होता है, पता है आपको, उसमें बना के लाओ और क्या दिक्कत। यदि आपको लगता है कि आप लोकल में कोई डॉक्टर से कोई डेटा ला सकते हो, कोई बीमारी का कलेक्ट करके ला सकते हो, डायबिटीज जैसे वो अवेलेबल ही है मान लो, लेकिन आप चाहे तो रियल बर्ड भी ला सकते हो, जो आप खुद से भी ला सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, वो भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है। तो डेटा सेट लाओगे, या कोई भी प्रॉब्लम है आपको, जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, नई प्रॉब्लम को, उसका डेटा लाओ ना, पहले उसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अभी जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन हुआ, ये भी एक प्रॉब्लम था, लोगों को प्राइस प्रेडिक्शन करना है, अच्छा वो भी एक प्रॉब्लम, हर एक चीज का प्रेडिक्शन होता है। अभी जैसे कोरोना है मान लो, तो कोरोना में कोरोना का प्रेडिक्शन करना है आपको, वो भी कर सकते हो। अभी जैसे अब जैसे होता है ना, आपने देखा होगा हर दिन शेयर मार्केट में हर डे क्या होता है आपका प्रेडिक्शन, आप उसमें भी कर सकते हो। उसके लिए टाइम से उसका अलग पार्ट है, फिर भी देखो उसके लिए हर चीज पॉसिबल नहीं है सबसे ना, लेकिन उसके लिए फिर प्रेडिक्शन है, टाइम सीरीज बोलते हैं, जो रियल टाइम में होता है। ठीक वहां से डेटा लेगा और उसके बेस पे वो बताएगा कितना प्रेडिक्शन होता है, सही होता है। तो वो सब उसका लेवल है, वो सब डीप लर्निंग में आता है। कहाँ आता है? डीप लर्निंग का। अभी ये बेसिक मॉडल है ताकि इंट्रोडक्शन पार्ट है कैसे कर सकते हैं। अभी तुम चाहोगे बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फिर आपको मशीन लर्निंग में जाना है और अच्छे से प्रोजेक्ट करना है, तो फिर डीप लर्निंग सीखना होगा। बट ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट करके ऐप बना सकते हो। तो ये चीज करोगे तभी तो ऐप पे हम चलेंगे ना। और फिर कुछ बच्चे, मैक्सिमम बच्चे पीछे लैग हो जाएंगे, तो फिर कैसे आगे बढ़ाएंगे? प्रॉब्लम ये है। तो स्पीड आप लोग भी कम से कम स्पीड के साथ चलो, साथ में चलो, तभी पॉसिबल हो सकता है। करके नहीं लाओगे, बहाना बनाओगे, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। बहाना बनाते हो तो अपना नुकसान करते हो, सिंपल सी बात। एक्सक्यूजेस जो है ना, आदमी को हमेशा नुकसान ही देता है, फायदा पे भी नहीं देता। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। आप लोग को भी मैं बोल रहा हूँ, मैं अगले क्लास में सेक्शन अभी चेक करूंगा। मिनिमम 1-2 एल्गोरिथम सबका होना चाहिए, डाटा नहीं है सबका, अलग डेटा सेट होना चाहिए। मैंने बोला भी था आप लोग, ठीक है। प्रॉब्लम वाइज बताया था मैंने।
बॉडी में अभी बताओ, मैं ओपन सीवी आपको करके ला रहा, तो मैं ओपन सीवी बताता आज। ओपन सीवी हाँ खड़े हो जाओ। अभी क्या बोला था, कौन सा बॉडी यूज किया? सी ओपन डाटा